Hello, welcome my dear students to the social science lecture. Hope you all do well. जैसे कि हमने लास्ट क्लास तक स्टडी किए थे ट्रेडिशन मेथड्स, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी and some scholars of the 18th and the 19th century. In that last we studied the Karl Marx. But before that, as you know that we have studied Leopold Wohlrank, George William Friedrich Hegel, and even there Voltaire and René Descartes. In that, there was one theory which was given by the George Hegel, and that theory was known as the dialectics. As you can see here, the word dialectics. On your screen, you can clearly see the word dialectics. Now, before going to further, I want to explain you what is the theory of dialectics. So, my dear students, listen it carefully. According to Hegel, grasping the meaning of any event happens in two terms, and that is two direct opposites. Human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposite. For example, true or false, good or bad, etc. तो यहाँ तक का क्या मीनिंग होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हम उसके पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स हमेशा चीज़ों को देखते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल मिरर की, तो मिरर का फ्रंट साइड जितना क्लियर होता है उतना ही डार्क उसका बैक साइड होता है. In the same way, whenever you studied any topic, you have to study both the content, that is a positive as well as a negative content of that particular thing. So, human mind cannot understand the true nature. जब तक वो नहीं समझ पाता, तब तक नहीं समझ पाता जब तक वो उस चीज़ के अपोजिट का नहीं समझ लेता. जैसे कि एग्जाम्पल है, आप कभी भी किसी को फ्रेंड बनाते हो या आप कभी भी किसी चीज़ के कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो तो आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें देखते हो और उसके बाद जो आपको सही लगता है आप करते हो. तो वही सेम तरीके के लिए हेगल ने एक्सप्लेन किया है कि जो ह्यूमन माइंड है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता किसी चीज़ का ट्रू नेचर. कब तक? जब तक उन चीज़ों का अपोजिट नहीं जान लेता, जैसे कि ट्रू और फॉल्स और गुड और बैड. Next, in order to understand the true nature of one thing, need to know both true and false. Similarly, good and bad. And this method of analysis, underline this method of analysis, which is based on opposites, is known as dialectics. जो ये मेथड है जिससे हम एनालाइज करते हैं, जो ह्यूमन माइंड एक एनालिटिकल माइंड के थ्रू जो स्टडी करता है, इसी मेथड को जो अपोजिट को स्टडी करता है, इस मेथड को क्या कहते हैं? डायलेक्टिक्स कहते हैं. सो वेन एवर यू ask a question by teacher or in your paper, you have to mention that first thing that this theory was given by George Hegel, and the second point will be grasping the meaning of any event happen in the two direct opposites. Third one, human mind cannot understand the true nature of event without understanding opposite. For example, true or false or good or bad. And last one, in order to understand the true nature of one need to know both true and false, good or bad. And this method of analysis, which is based on opposite, is known as dialectics. Next, now in the dialectics also there were two or three different things were there. One is thesis, second is antithesis. Thesis means a true thing or a good thing, or antithesis means opposite. It means a bad or a false things. And when this thesis and antithesis come together, a new theory is proposed that is known as a synthesis. So thesis, antithesis and synthesis. Remember these three words. So now we will move to the theory. In this method, a theory is proposed. In which method? In dialectics method. Why the dialectics has been mean to be a two opposite word? That was explained in the next paragraph, so you can understand it clearly. In this method, a theory is proposed at the beginning, which is called a thesis. Then another theory is proposed, which is contrary. Underline the word contrary and write down the meaning opposite. Contrary का मतलब होता है opposite.
and when the another theory is proposed which is contrary to the thesis, it is called as antithesis. Next, after a thorough logical discussion of both new thesis is proposed, means after studying the thesis and antithesis, a new person will try to formulate one new policy or a new proposed theory, and that theory will be known as a synthesis. So after a thorough logical discussion of both, a new thesis is proposed which include the gist of both. Gist का मतलब होता है togetherness, उस चीज़ के दोनों के कंटेंट उसके अंदर होंगे. अ जिस्ट ऑफ बोथ, दैट इज थीसिस एंड द एंटीथेसिस, एंड द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द न्यू थीसिस इज कॉल्ड एज सिंथेसिस. So my dear students, please remember the theory of dialectics which is given by Hegel, which is based on two direct opposite. Human mind cannot understand any true nature without understanding the two opposite word, that is true or false, good or bad. And whenever we have to prove the dialectics, we have to understand a thesis and antithesis. And after this thesis and antithesis, thesis means a theory is proposed, antithesis is a theory is proposed to the thesis which is contrary to the thesis. And next, after a logical discussion, when new thesis is proposed, and in that thesis the gist of thesis also and antithesis also is there, and that new thesis is called as synthesis. Hope you understand well. If you unable to understand, then you can go back and slowly understand the whole process of dialectics and the synthesis. Now we will move forward to the next, annal school. Now before going to the annal school, I will tell you something about the annal school. It is all about the historiography and the historians. As you know that the people who are studying in Nalasopar, they were known as they were the Nalasopar school members. They are the people who are studying in the Bhainder and the Mother Mary school, SN college, and they were known for the particular college. In the same way, when a person is belonging to a particular place or a particular schools, and in that when a new study is emerged, then that study is famous on the behalf of that particular school. So here the name was kept as an annal school. एज़ यू नो, आपको जैसे पता भी होगा कि ऐसे और भी बहुत से एंशियंट की स्कूल्स हैं जो बहुत फेमस थी. जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी है जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो अपने नाम पे ज़्यादा फेमस है. और यहाँ से अलग अलग चीज़ों के बारे में स्टडी, अलग अलग चीज़ों के बारे में रिसर्च बहुत वर्ल्ड में फेमस है. तो ऐसे ही एक स्कूल है जिसका नाम है एनएल स्कूल. सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स दैट. At the onset of 20th century, a new school of historiography arose in the France, which is known as annal school. Underline the three word 20th century. Historiography arose in France, known as annal school. Onset का मतलब होता है शुरुआत. Onset का मतलब क्या होता है? शुरुआत. जो 20वीं सदी की शुरुआत थी उसमें हिस्टोरियोग्राफी अराउज हुई फ्रांस में, जिसका नाम फेमस किस नाम से हुआ? एनल स्कूल. Annal school gave a new direction to the history writing. It was recognized now that history, underline, it was recognized, मतलब उन्होंने recognize किया that the history is not only about the political event, king, great leader, and accordingly politics, diplomacy and war, but also उनका कहना क्या है कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ नेतागिरी के बारे में, राजा के बारे में, या बड़े बड़े लीडर्स के बारे में, या उनकी डिप्लोमेसी या उनके वॉर के बारे में नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीजन एंड द कलेक्टिव साइकोलॉजी. अब एक एक करके मीनिंग अंडरस्टैंड करो. पॉलिटिकल इवेंट, पॉलिटिकल मतलब उस समय राजनीतिक क्या क्या निर्णय लिए गए उसके बारे में. किंग आपको मालूम है, ग्रेट लीडर जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनके बारे में. डिप्लोमेसी मतलब होता है कि लेन देन उस समय में कैसी चलती थी.
पॉलिटिकली। वॉर, युद्ध क्या होते थे, क्लाइमेट, अब यहाँ पे क्या बोला, बट ऑल्सो किसके बारे में होनी चाहिए, क्लाइमेट, हमारे वातावरण के बारे में, लोकल पीपल के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जरिए जिसके थ्रू माध्यम से बात हो। जैसे आज हम यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, अलग अलग व्हाट्सअप हो, इन सब के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट एंशियंट टाइम में या फिर मिडिवल टाइम में या फिर उस स्टार्टिंग के मॉडर्न पीरियड, प्री मॉडर्न एज में ये सब मीन्स नहीं थे। तो उस टाइम कौन से मीडियम थे उनके बारे में भी लिखना ज़रूरी है। तो जो एनल स्कूल थे वो क्या कहते थे कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडर के बारे में लिख के या सिर्फ राजाओं के बारे में लिख के सफिशिएंट नहीं है, बल्कि हमें उस समय के क्लाइमेट के बारे में, उस समय के लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, वहाँ के ट्रेड, वहाँ के कम्युनिकेशन, वहाँ के सोशल डिवीजन, समाज में क्या डिवीजन था, क्या भेद, विभिन्न प्रकार के लोग वहाँ रहते थे, उनके बारे में भी हमें उस हिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। एंड कलेक्टिव साइकोलॉजी, मतलब उस समय के लोगों की सोच क्या थी, उस समय बाल विवाह था कि नहीं था, उस समय सामूहिक कार्यक्रम होते थे कि नहीं होते थे, मतलब ये सारी चीज़ें, सोशल कस्टम्स थे, रिचुअल्स क्या थे, उस टाइम के रिलीजियस वर्क क्या हुआ करते थे, तो उनकी सोच यानी कलेक्टिव साइकोलॉजी उनकी क्या थी, उसके बारे में भी हमें हिस्ट्री में लिखना चाहिए। ये किसने कहा, एनल स्कूल के बारे में, यानी एनल स्कूल के हिस्टोरियोग्राफर ने ये एक नया तरीका ढूंढा हिस्ट्री लिखने का। And in the historical time, the annal school was started by the French historian। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, तो फ्रांस में लिखने वाले कौन होंगे, फ्रेंच हिस्टोरियन। सो annal school was started in France and it was started in France, which is known as aroused in the onset of 20th century, and it was known as the annal school. And annal school gave a new direction to writing the history. He recognized that not only the political event, king, great leader, but also about the climate, local people, agriculture, communication, social division and collective psychology। हमें इन सब के बारे में भी लिखना चाहिए। Hope you understand, my dear student. Now the next one is the feminist historiography, and this is the second last topic. Feminist historiography. Now before going further, we have to understand what does the feminist means. Feminist, it is totally regarding the females. As you studied history of Akbar, as you studied the history of Maharana Pratap, there was already and always there is an information regarding the king. Then what about the queen? Then what about the local women who played a role in the history? So there were many historians who ignored the woman factor while writing the history. So to involve the woman in the history, one new historiography emerged which was written by the females, and that was known as the feminist historiography. So as you see that in the ancient time and the medieval time, there was a least role was showcased in the history of women. But when you studied the modern history, you can even know more about the woman as compared to the males. So this was due to the feminist historiography. Feminist historiography means the restructuring of the history from the perspective of woman. The writing of Simon de Beauvoir, underline. First, who write about the feminist historiography? Simon de Beauvoir, helping in establishing the fundamental of feminism. Ism का मतलब होता है आइडियोलॉजी, और फेमिनी मतलब होता है फीमेल, फीमेल के बारे में, तो फीमेल की आइडियोलॉजी वाला लिखा हुआ लेख उसको बोलते हैं फेमिनिज्म। तो फर्स्ट टाइम साइमन डी बिहेवियर जो थे उन्होंने इसके बारे में लिखाया गया, जो फीमेल थी उन्होंने इस चीज़ के बारे में ज़्यादा करके इन्वॉल्वमेंट दिखाया। शी वॉज एन फ्रेंच and she was a French historian. The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history, उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ वुमन को हिस्ट्री में इन्वॉल्व मत करो, बल्कि वुमन ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है पास्ट के अंदर, उस चीज़ को मेल हिस्टोरियोग्राफी के अंदर रिस्ट्रक्चर किया जाए। ये चीज़ इंपॉर्टेंस बताई गई, किसने बताई थी? साइमन डी बिहेवियर। Who was she? She was a French historian. The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history, but also on rethinking of male-dominated perspective of history. It drove historical research to focus in depth
on the various concepts of woman life, such as their employment, their role in trade union, institution, working for their cause, their family life, etc. तो इन चीज़ों को इन्वॉल्व करो कि उनको उस टाइम पे जॉब था कि नहीं था, उनका क्या रोल था बड़े बड़े ट्रेड यूनियन में, था कि नहीं था उनका रोल, इंस्टीट्यूशन जो उनके लिए काम करते थे, जैसे एग्जांपल है सेवा सदन इंस्टीट्यूशन है, या फिर आजकल जैसे देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े। तो उस टाइम कौन से इंस्टीट्यूशन थे या नहीं भी थे, उन चीज़ों को हिस्ट्री में लिखना ज़रूरी है। देयर फैमिली लाइफ, जैसे पहला कस्टम था कि जैसे विडो रीमैरेज नहीं होता था और चाइल्ड मैरिज ज़्यादा फ्लरिश था, सती सिस्टम इंडिया के अंदर प्रिविलेज था, जो आज सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। तो ये चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, यानी हिस्ट्री लिखने के टाइम इन चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर द 1990s वुमेन वर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। तो जैसे ओपन ओबीसी SC ST के बारे में लिखा जाता था, वैसे ही वुमेन के बारे में एक अलग से सेक्शन लिखा जाता था जब भी हिस्ट्री लिखी गई। कब? 1990 के बाद से। क्यों? तब तक ग्लोबलाइजेशन का दौर चल चुका था और अलग अलग लोगों की साइकोलॉजी यानी वर्ल्ड की साइकोलॉजी हमारे साथ में शेयर होने लग गई और हमने भी इस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया और हमारी हिस्ट्री के अंदर वुमेन को एक सोशल क्लास करके एक अलग से क्लास बना के उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चालू किया। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अ मिशेल फौकॉल्ट। underline the year 1926, 1984. My dear student, you have to remember the name, place and the year of each and every scholar. Why? Because if you have in your question paper match the pair, fill in the blanks, you can easily write the answer. So please remember the name, place of the particular scholar and the year of a particular scholar. Now the French historian of 20th century, Michel Foucault, brought forth a new concept of historiography. Now he also bring one new concept, as Simon de Beauvoir bring out the concept of feminist historiography, Karl Marx bring the theory of social class struggle, and above that the Hegel brought the theory of dialectics. In the same way, Michel Foucault also bring one new theory in the 20th century and put forth a new concept in a book that is known as the Archaeology of Knowledge. Argued that prevailing the practice of arranging the historical event in the chronological order is not right. जो हम उसको इवेंट के हिसाब से लिखते हैं ना, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। तो ये जो हम करते हैं ये बहुत गलत है। He drew attention to that fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempt to explain the various transactions in the past. हम ये नहीं बता सकते पत्थर को देख के कि पत्थर कितने साल पुराना है, या ये नहीं बता सकते कि ये बिल्डिंग जो इमारत बनाई गई है कितने साल पहले बनाई गई है। आज अगर लिखा रहता तो बिल्डिंग पे डेट लिखी जाती, लेकिन पहले के जो बिल्डिंग है या फिर फोर्ट्स है उससे देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये कितने साल पुराना बनाया होगा। तो उसके हिसाब से हम जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डिसाइड करते हैं वो गलत है। यानी कि इनका कहना ये है कि आर्कियोलॉजी जो है वो सिर्फ ट्रांजिशन एक्सप्लेन करती है अलग अलग पास्ट के बारे में। यानी पहले अगर कच्चे मकान थे बाद में पक्के मकान बन गए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लोग जो रिच हो गए थे या फिर यहाँ पे जो स्टोन का यूज़ करना वो लोग जान गए थे और अच्छी क्वालिटी से अब होम बनाना चालू कर दी। तो आर्कियोलॉजी सिर्फ आपको ट्रांजिशन समझाती है कि पहले क्या था और बाद में क्या था, वो एक डेट को बता सकती नहीं है। सो Foucault felt that explaining the transaction in history is more important, not the chronological order. उनका कहना है कि ट्रांजेक्शन समझा दो बस हो गया, डेट की ज़रूरत नहीं है। सो हिज मैथड इज नोन एज आर्कियोलॉजी इन नॉलेज, नॉट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो ही कॉल्ड हिज मैथड द आर्कियोलॉजिकल ऑफ नॉलेज। अंडरलाइन द स्टेटमेंट, ही कॉल्ड हिज मैथड आर्कियोलॉजिकल ऑफ नॉलेज। Underline from here, he drew to the fact that archaeology, and till underline he called his method archaeological of knowledge. Next, Foucault subjected that so far the unacknowledged area by the historian, such as psychological disorder, science of medicine, prison administration, etc. to the historical analysis. Foucault का ये भी एक कहना था कि सिर्फ हमें, जैसे कि आपने देखा रहेगा जो मिशेल फौकॉल्ट
एनल स्कूल थी, उन्होंने भी यही कहा था कि सिर्फ राजा के बारे में लिखना या फिर सिर्फ उनके वॉर के बारे में लिखना, उनकी डिप्लोमेसी के बारे में लिखना सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, उनके अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो वैसे ही मिशेल फुकोल्ट ने भी कहा कि जो हमारी हिस्ट्री लिखी गई, यानी उस समय में जो भी हिस्ट्री लिखी गई है, उस हिस्ट्री के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब उस समय अगर पागलों को कैसे ट्रीट किया जाता था, या फिर उस समय मेंटल टेंडेंसी क्या होती थी, डिसऑर्डर जो हो जाता था वो कैसे होते थे, तो उनके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया। मेडिसिन के बारे में कि साइंस में मेडिसिन में कैसे ग्रोथ हुआ, वो कुछ नहीं डिस्कशन किया गया। प्रिजन, जो कैदी थे उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ करता था, जो सेना में जो पकड़े जाते थे उनको कैद किया जाता था, उनके साथ क्या बर्ताव होता था, वो सारी चीज़ों को भी हमें हमारी हिस्ट्री में इन्वॉल्व करना चाहिए। दस, द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग। इसी कारण अलग अलग स्कॉलर्स, अलग अलग हिस्टोरियंस के कारण हमारी हिस्ट्री आज भी बढ़ती जाती, क्योंकि हर एक के दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ और न्यू एरियाज़ इमर्ज होते रहते हैं। जैसे पहले कहा जाता था सिर्फ वॉर लिख दो, राजा के बारे में लिख दो, हिस्ट्री ख़त्म। फिर हो गया कि उनके बारे में लिखो, उनके एरियाज़ में क्या हो रहा है वो लिखो। उसके बाद कहा गया उनके ट्रेड के बारे में, उनके एग्रीकल्चर के बारे में, इरिगेशन के बारे में लिखो। अब कहा गया उनके साइकोलॉजिकल के बारे में लिखो, मेडिसिन के बारे में लिखो, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ऐसे ऐसे करके एरियाज़ बढ़ते गए, और आज in today's era there is many areas of historiography which is involving while the writing of history. So the writing of historians of histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, films, टेलीविज़न एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। आज ये सारे एरियाज़ हिस्ट्री लिखने के समय एक चीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है जिससे हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। बट ये एरियाज़ है कि एक्सपांड होते रहते हैं आगे, और हिस्ट्री इज़ नॉट अ स्टैटिक पार्ट, हिस्ट्री इज़ इंक्रीजिंग और हिस्ट्री इज़ एक्सपांडिंग एट एवरी रिसर्च। जैसे जैसे रिसर्च होती रहेगी, जैसे जैसे हमारा माइंड एक्सपांड होता रहेगा, न्यू न्यू आइडियाज़ इमर्ज होते रहेंगे, वैसे वैसे हिस्ट्री एक्सपांड होती रहेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट। नाउ देयर इज वन होमवर्क फॉर यू that you have to find out the answers of this exercise. Question number 1a, question number 1b, question number 2, question number 5। बस आपको ये ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको ढूंढ के निकालने हैं, और नेक्स्ट क्लास जब होगा, जब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का या फिर पॉलिटिकल साइंस का, तो उस क्लास के अंदर आपको मुझे इसके आंसर्स बताने होंगे। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड डू वेल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।